इस चैनल पे बहुत सारी बार 99 परसेंटाइलर्स की बातें हुई हैं एंड आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड द कमेंट कि हमेशा 99 परसेंटाइलर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, बट सक्सेस स्टोरीज वो भी होती हैं जब आप एक सर्टेन परसेंटाइल से बहुत बड़ा जंप लेके इंप्रूव करते हो. सो टुडे वी हैव अ गेस्ट हु एक्चुअली इंक्रीज्ड हिज परसेंटाइल फ्रॉम 50 percentile to 95 in quants, and similarly a similar story in verbal as well. And today we are going to learn from Hemant, who was a BCom honor student at St. Xavier's, कि उसने exactly क्या किया that the sectional percentiles improved by a great margin. So welcome Hemant to the channel. First of all, let me ask you like the basics. How did this journey start? How did you think of appearing for CAT 2020, and then what changed in 2021? Everything from the beginning. So the thing is 2020 में लॉकडाउन हुआ. So सडन शिफ्ट हुआ कॉलेज से घर में बैठ के. So after 2 3 4 months of sitting, just realize किया कि कुछ और करने के लिए है ही नहीं. कैट दे देते हैं. I signed up for a offline coaching जिसका पैसा वेस्ट हुआ. So I did preparation 5 6 महीना किया. Like शुरू का 2 3 महीना बहुत ज्यादा, बाद में थोड़ा कम because college started, and then I went for CAT 2020 and obviously it didn't turn out well. Then I was not sure कि अब करना क्या है. एक ऑफर था जॉब का 5 LPA का, and then there was this option to go for CAT with 170 days in hand. So I dropped the offer and I took like 170 days in my hand, pura full josh, committed, and then I went for CAT 20. And like you mentioned that, the sectional percentiles in CAT 2020 were somewhere close to 50, or in some sections it was like 14. Did it not demotivate you? How did you keep yourself motivated to prepare for another year? Because log jab repeat karte hain, this is their biggest concern. You need to understand that were you on your top game on that day or not? ठीक है. I was very sure कि मेरा preparation भले ही ठीक ठाक हुआ, but I was not on my top game. And then if you have to manage CAT with job, it's extra hectic. So mentors ने कहा कि like ये drop year ऐसे पेपर पे होता है but mind में नहीं होता. So I thought ठीक है, अगर ऐसा ही बात है तो let's give my 6 months and see what happens. एंड उन 6 months में व्हेन यू रियलाइज्ड कि अब जो सेक्शनल परसेंटाइल्स पिछले साल थी, अब उसके ऊपर ओवर एंड अबव अचीव करना है, इंप्रूव करना है. So how did you start changing your strategy for the sections that you improve? तो शुरू में like I used to watch videos 8 hours a day and फिर लेके बैठो उसको रिविजन करो, right? But ये प्रोसेस चलता रहा. I had a peer group of 6,000 people, right, in Telegram. So वहाँ हम डाउट भेजता था. जो डाउट पढ़ने में मेरे को जितना देर में हम पढ़ता था, कोई बंदा उतना देर में सॉल्व करके भेज देता था. ये क्यों हो रहा है? मतलब हम क्यों नहीं कर पा रहा? So then there was this extra peer motivation. अब इसको इस तरह से ये भी बोल सकते हैं, you can be demotivated as well. कि भाई ये 15 सेकंड 20 सेकंड में कर रहा है, इससे हम कैसे लड़ेगा. और एक होता है कि ये 15-20 सेकंड में कर रहा है, हमको भी करना है. I was on this side कि हमको भी करना है. One good thing that you should have in your CAT preparation is a good peer group who wants to share what they know. Like there are a lot of people who don't want to share. वो लोग सॉल्व करके दे देगा, ये लो आंसर, कैसे किया मतलब नहीं. तो यही था कि अब परसेंटाइल अगर ऊपर नहीं किए तो घर पे तो सुनने मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, और पूरा प्लान धस जाएगा. तो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब दे दिया पूरा टाइम तो करो. So let's like delve further into that plan, specifically for quants, because you pushed your percentile from 50 to 95. That's a big jump. I just want to understand ki what changes did you make in your preparation that landed you at such a high percentile? So I had a CAT worksheet. I used to record everything that I did in a day in a worksheet. I think can I share it? Yeah, of course. I think it will be really helpful. Like I'll show my journey from June. This 21st June that I started. So it's the first day, obviously. Okay. And then I did 4 classes of algebra. And in total, CR ka ek class, LRDI ka ek class, to just put the context like for LRDI and CR. How many, what I have to do, what I don't have to do. And as you can see here, I had tagged the number of classes. So you can see in 10 days, I did 45 classes. Did I complete the material? Did I have a lot of doubt? या उसको वापस रिवाइज करना है. So the thing in QA is once you complete it, first you will have to keep revising. But जो लोग दिसंबर से प्रिपेयर कर रहा था पिछले, उन लोग से भी बहुत लोग से ज्यादा हम QA में स्कोर किया. The reason being, I was on the top game for 170 days. So I was giving mocks, I was practicing. So all the shortcuts, formulas, everything was in my mind. And I didn't touch geometry. Now this is one learning that I can give.
like geometry का question आती छोड़ दो. I can tell you without geometry or like without doing one section, you can totally do it if you are very good in all the other sections. Just make sure that you are calm and composed while reading the question, because वो एक एक word जो होता है ना QA का, वो पूरा answer बता. There are three good takeaways that I feel you just mentioned. One is that revision continuously करते रहो. It's not like कि आप पहले पूरा syllabus कर लिया, then उसके बाद अचानक से याद आ गया, अरे यार formulas भूल गए हैं. So keep revising them alongside. Second, you mentioned that prioritize the chapters that you think are more important, and you can leave a certain section or a chapter and still be able to like score 95 plus. For example, you left geometry. And then another thing which I really liked about your preparation is that you said कि Telegram groups का use किया to resolve doubts. So I want to delve further into this because I want to know कि ऐसे Telegram groups कौन से हैं या how to find them, because a lot of people might not know about it. So Unacademy का जो teachers group है, so you can easily, और CL का group है, एक तो Simcat का IMS का group है, both are public groups. तो लोग snapshot दे सकते कि यार इसका solution समझ नहीं आया time वाला. तो मुझे अच्छा ये क्वेश्चन आया था, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, सो आई यूज्ड टू नोट इट डाउन. वन मोर थिंग दैट आई हैड, लाइक आई हैड दिस थिक नोटबुक, एंड ड्यूरिंग माय मॉक प्रिपरेशन जितना भी मेरा सम गलत होता था वो उसमें पूरा प्रॉपर्ली हम लिखता था. उसका आईएमएस में जो सोल्यूशन होता था वो लिखता था, उसमें हम खुद का सोल्यूशन डालता था जो हमको उस वक्त फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आया, ताकि मेरे पास दोनों सोल्यूशन है. और व्हेन आई नो हाउ माय माइंड गोज and one how teacher says your mind should go. So I know where is the gap. And secondly, जो क्वेश्चन में राइट भी हो जाता था, like there were some क्वेश्चन जो दिखा रहा था कि टॉपर्स लोग 1 मिनट में किया बट हम 30 सेकंड में किया, हम उसको भी नोट डाउन करता था अगर उसका सोल्यूशन आईएमएस में अच्छा है. So I used to make sure कि ठीक है अगर हम जल्दी भी कर लिया, but if they have like if they thought something that I didn't, then it's noteworthy. So I have this thick notebook. तो क्या कि एक हफ्ता पहले I had 500 questions. The questions which either I couldn't do, and this didn't include geometry. You should go by your cue, like always revision, always go for a better method, always see what is the gap in your thinking, and the person who says कि ऐसे सोचना चाहिए. So now there are a lot of IMS people, obviously they have been teaching for 25-27 years. कुछ चीज तो उन लोग को पैटर्न समझ आ चुका है जो हम लोग को नहीं आएगा. जैसे मेरा था कि हमको ये पैटर्न अच्छा लगा, हमको समझना है, तो उससे हम 40 सम कर दिया कि हाँ ये सेम पैटर्न पे हम 40 सम किया. अब अगर ऐसा सम आया ना, हम 1 सेकंड में पैटर्न पकड़. And do you believe, like you mentioned, कि faculty members को pattern समझ आ जाता है? You have appeared for CAT twice, so you must be aware कि बार-बार questions repeat होते हैं, like एक ही तरह के questions बहुत बार आते हैं. So noting down such questions would certainly help you crack them easily. हाँ, even in IIFT, like some of the questions were from previous CAT papers. So अगर जो लोग previous CAT papers properly solve किया, वो लोग को question देखती कर देगा. मार्केट से निकल जाए. तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू मतलब मैंने 2008 से लेके 2020 तक का सारा पेपर सॉल्व किया था. I would love if you could like show again the sheet that you were showing me in the beginning of the call when we were talking, and how you analyzed these scores by making graphs. It was so impressive. I just want the audience to know how much effort you put in. मतलब I just want them to know कि मेहनत लगती है, and if you want better results तो मेहनत करनी पड़ती है. One thing that people cribbed about during all the mock time is कि भाई मार्क्स नहीं आ रहा. भाई मार्क्स से मतलब भी नहीं है, ये परसेंटाइल का गेम है, इट्स अ रिलेटिव ग्रेडिंग गेम. राइट, अगर तुम्हारा मार्क्स नहीं आया और सामने वाले का भी नहीं आया बट तुम्हारा 0.1 भी अच्छा है तो तुम उससे अच्छा. राइट. So I used to see the percentile and you can see the kind of volatility, like sine curve बन गया almost पूरा. And हर बार यही था. So if I show you, like you in the starting of the call you asked me ना कि demotivated होता है कि नहीं. I'll show you something. Last 3 mocks मेरा sectional वाला उसमें negative आया था मेरा. You can see the score here, the bold ones. Oh God. You can see the date, you can see the score. कि क्या scores आ रहा था मेरा. How did you keep yourself motivated? I'm pretty sure बहुत सारे लोग demotivate हो जाते होंगे ऐसे स्कोर को देख के, especially just a few days before the exam. Like, were you not stressed out? Did that help कि stress नहीं लिया या something of that sort? नहीं लिया. Like I used to analyze this way. You can see कि मेरा कौन सा क्वेश्चन कहाँ wrong हो रहा है. There is no section
in which I didn't score a 0 during my full length mock. जब लोगों के मॉक्स में मार्क्स नहीं आते ना, दे आर लाइक इट्स ऑल गॉन, अब नहीं आ सकते. आई You जस्ट can वांट देम टू see, नो कि आ सकते हैं. यू स्कोर्ड 90 प्लस इन टू ऑफ योर सेक्शंस डिस्पाइट यू क्लेमिंग कि हर सेक्शन में जीरो था एक ना एक बार. so you'll have to analyze this thing. You'll have to see the graph. अब ग्राफ बनाने के पीछे मेरा मोटिव क्या था? हम अपना दोस्तों को दिखाया तो बोला तो ये सब क्या कर रहा है भाई, ग्राफ क्यों बना रहा है? I was trying to see what are the fluctuations I am having. I wanted to stabilize it. I also want to talk more about like the verbal section. So how did you increase your verbal percentile from 51 to 92? What did you do 51 to exactly? 90. Verbal is, I'll show you how I did, what I did. But then what happens is it's a time game. Like उस दिन क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? Like I said कि पहला लास्ट 3 मॉक में नेगेटिव आया. I won't say this to everyone to do this, but it turned out good in my case. Even in mocks, I used to attempt a lot of questions. So out of 22, Yes, let's say, absolutely. I agree. I totally agree. Attempt ज्यादा करने से मार्क्स ज्यादा आता है verbal में. so verbal में because you are not sure कि तुम्हारा राइट है कि रॉन्ग है. नेवर, यू कैन नेवर बी श्योर. अन्य एक दो छोड़ के, ऑब्वियस वाला छोड़ के, पीजे वीजे में तो कोई श्योरिटी नहीं. सो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 18. अगर इवन मेरा अगर 12 राइट हो गया, बट इफ यू सी इवन में 12 राइट हुआ तो इट्स 36 राइट मार्क्स एंड -6, so it's 30 eventually. And same thing happened with me in CAT. I just left one paragraph. Now VARC में क्या होता है ना, when you start second guessing yourself, it's good to always second मतलब critically analyze what you are thinking. But when you second guess yourself, the right answer actually you leave out. ये बहुत Because बार you होता will है start. कि वैसे ऑप्शन सही मार्क करने वाले थे बट बहुत ज्यादा सोचने के चक्कर में गलत ऑप्शन मार्क हो जाता है. मेंटर्स का ऐसा हो गया ना, लाइक वो लोग बोलते हैं कि एनालाइज क्रिटिकली एनालाइज, सो यू सडनली स्टार्ट सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर, जिसका कोई मतलब ही नहीं है. राइट, मैं फैक्ट बेस्ड इसलिए रॉन्ग होता था, हमको बाद में पता चला, बिकॉज आई वाज सो मच इनटू इट. हम ऐसा एक फैक्ट खोज रहे हैं जो इस ऑप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करे. सो इवन दो इट वाज द राइट आंसर, I was not sure in my mind and I was finding things that could prove me wrong. And उसमें खुशी मिलता था अजीब सा कि भाई अपने आप को गलत प्रूफ कर दिया, मतलब हम ये आंसर सही मार्क किया. सो VRC में यही था. रीडिंग करता था मैं, बट फॉर मी रीडिंग आई डोंट थिंक सो. एवरीवन सेज रीडिंग से बहुत अच्छा होता है. रीडिंग से ओनली वन थिंग दैट हेल्प मी वाज हम बोर नहीं होता. सो इवन दो पैराग्राफ व्हिच केम जो लंबा है, मेरा था कि वर्ड्स माइंड में चलता है, बट दोस हु डोंट रीड एंड फर्स्ट टाइम वो लोग VRC का पैराग्राफ रीड कर रहा है, आई कैन बी श्योर दैट वर्ड्स उनके माइंड में पूरा ऐसे क्लैश कर जाए. तो अब एडिटोरियल समझ नहीं आ रहा, उसको लेके बैठे तो और कुछ नहीं होगा. एंड आई हैड वेरी लेस डेज, सो आई वाज लाइक क्या करें. एओनेसिस इतना लंबा, इतना तो हम पूरा दिन में VRC नहीं पढ़ता था जितना कि एओनेसिस होता था. लाइक कैसे करा जाए. तो वही है VRC में practice. I will show you what I used to do in Khan Academy. 15 CR, 18 CR, 10 CR, 10 PG ऐसे करके करता रहता था, VA करता रहता था. कि I never missed out on it because there was this one thing that I believe if you're good in CR, a lot of things will fall in place for you. Because then you'll actually start seeing things in another way. Like we can CR it to you practice, so you'll see many kinds of question steps. And CAT में क्वेश्चन के हम अलग अलग करके देने लगते हैं. Like they are asking the same thing in a different way. So you need to know what are the kind of question stems that can come. I used to record everything. Like आज क्यों नहीं हुआ, आज ब्रेक लिया, आज मॉक डे था, आज अरिथमेटिक रिवाइज किया, आज अगर क्यों कुछ नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, राखी था, बुआ के घर पे रह रहा था. Right. So one thing I would say is be very much accountable for your time. See what like अगर आज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. Because whenever I thought कि हम ब्रेक लेते हैं, मेरे को ऊपर में दिख रहा है कि भाई 2 दिन पहले हम ब्रेक लिया है, अभी किस लिए वापस एक ब्रेक चाहिए. राइट. सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड कि हाँ ये कहाँ ब्रेक ले रहे हैं, कहाँ नहीं ले रहे, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है. Hemant, I would just like to ask you one concluding question. अभी CAT 2022 के लिए a lot of students will start preparing and they are gonna like embark on the same journey that you went through. So what is that one thing that you would want them to remember? Because बहुत लंबा journey है. So what is something that you would want to share जिसकी वजह से शायद किसी का preparation थोड़ा easy हो जाए? Keep your priorities right. Take a little bit of breaks for QA. Keep revising. Like keep revising as in either go to your notebooks
or ask people for doubts. It's a aptitude game. So every time you consume something new, you learn something. Your mind grows, Hmm. right? So get it from different, yeah. And IMS time CL ये सब का material solve नहीं हुआ तो stress मत करना. Like a lot of people stress out कि CL का ये सब नहीं हो रहा है, IMS का hard है इतना material. And one more thing, please avoid asking 10 में इतना, 12 में इतना, graduation में इतना, what are the chances of I? It will show you in negative light. कि भाई इससे अच्छा preparation कर ले. And this thing matters in your peer group because if you are in negative light, people generally won't respond to you. ठीक है, so you will also, you know, get the need to have unconscious approval. Hmm. जिसके चलते then you'll again fall into the trap of being social, पूरा time online रह के again you do this and that. ठीक है, and one more thing, like if you don't have anything like cat करना है, and I think you would agree, Shweta, like you have done more than me. I've seen your LinkedIn profile. Uh, if you have a little bit of time, do an internship as well if you don't have anything on your CV. Because I can say one thing, in the last 170, 180 days, you can easily pull off. It's not hard. But then if you get good percentile, but you don't have anything to talk about in your interview, they would say कि भाई कैट के लिए एक साल प्रिपेयर करके कोई भी 99 ला सकता है. And it's the truth. कि कैट के लिए मतलब even though luck factor counts, but 1 year is more than enough to get 99. Then they'll be If like, और क्या I किया? you और क्या किया, Hmm. हाउ आर यू अ मैनेजर, और क्या किया भाई, घर में बैठे तो कोई भी कर सकता है, राइट? सो डोंट बी जस्ट कि लाइक हमको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है. एक चीज को साइड में कर लो, छोटा सा अभी कर लो. फॉर द पीपल हु आर इन कॉलेज अभी कर लो. एंड देन डोंट टेक स्ट्रेस. हम बहुत लोग बोलेंगे कि वो गैप ईयर वाला चीज है 6 months का. इट्स नॉट देयर. किसी के भी माइंड में नहीं है, कोई भी नहीं पूछता है. It's बस just एक in चीज our पूछा heads. जाता है हम कि लोग basically reasons ढूंढते रहते हैं कि क्यों नहीं होगा. Like I made a video on the channel एक बार कि मेरे कुछ बैचमेट्स के पास 2 या 3 साल का भी गैप ईयर था. एंड कई लोग तो मतलब even despite having gap years they made it to such great companies. McKinsey तक में लोग गए हैं. Like still it's there in like their heads कि gap year की वजह से नहीं होगा. I think people just look for excuses all the time कि क्यों नहीं होगा. right. And there, the truth is there are a lot of people who can back it up. If you ask in a Telegram group now, so there will be more people writing भाई तुम सही है, and less people writing भाई इससे कोई मतलब नहीं. Because the people, those who know इससे कोई मतलब नहीं, they are not in the Telegram group searching for these Yes. tags. They are searching for the question. Yeah, I mean, honestly, I feel like this conversation is for sure gonna help a lot of people, especially जो maybe थोड़ा lost feel कर रहे हैं preparation time में. So yeah, thank you Hemant for like taking out such valuable time and coming on board and sharing your experience. And I believe कि अगर किसी को भी लग रहा है ना कि उनका preparation track पे नहीं है, so the method that Hemant has shared, I think it will do wonders and it will hold you accountable as well. So like try inculcating it, and I'm sure then you can also see a jump in your percentile scores like Hemant did. So yeah, thank you so much Hemant again for taking out time and coming onto the channel and helping others out.